हेलो इन्वेस्टर्स और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके शेयर मार्केट से जुड़े हर सवाल का एक आसान और सीधा जवाब। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अब स्टॉक मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिविजुअल्स हों या इंस्टीट्यूशंस। आप और हम इन्वेस्ट करते हैं इन द स्टॉक मार्केट एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। But do you know who are the domestic institutional investors? If not, don't worry. After watching this video, you will know everything about them. तो शुरू करते हैं ये जानने से कि आखिरकार DIIs यानी Domestic Institutional Investors होते क्या हैं? Simply put, they are a class of investors that undertake to invest in the financial assets and securities of the country they are residing in. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट डन बाय इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस सच एज बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड हाउसेस एटसेट्रा इन द फाइनेंशियल और रियल एसेट्स ऑफ अ कंट्री. Simply stated, domestic institutional investors use pooled funds to trade in securities and assets of their country. India में domestic institutional investors have a very important role when it comes to the performance of the Indian stock market. This is especially when the foreign institutional investors are the country's net sellers. एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में net inflows from DIIs, that is domestic institutional investors, was 26.8 billion US dollars as compared to the net outflows of 17 billion US dollars by the foreign financial investors. This data clearly shows how important are domestic institutional investors in our economy. Now, since we know who domestic institutional investors are, let's discuss their types one by one. So the first one is Indian mutual fund houses. Mutual funds invest the pooled investments of shareholders in a range of securities which vary with the goal of the mutual fund. इंडिया में म्यूचुअल फंड्स एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अमंग्स बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स एंड इवन एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी. म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स कैन पिक एंड चूज देयर फंड्स बेस्ड ऑन देयर रिस्क टॉलरेंस एंड वेल्थ क्रिएशन गोल्स, एंड अकॉर्डिंगली वो इनडायरेक्टली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बन जाते हैं. दिस इज जस्ट बाय द कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स. नाउ कमिंग टू द सेकंड टाइप. This is Indian insurance companies. This is another type of domestic institutional investors in India because they are all India-based and Indian-owned insurance companies. Insurance companies अपने clients को बहुत सारे insurance options देती हैं, जैसे life insurance, term insurance, health insurance, retirement options and even more. These are all important domestic institutional investor options. Now coming to the third type, that is local pension funds. These are pension schemes जिनका पर्पस इंडिविजुअल को हैसल फ्री रिटायरमेंट लाइफ देना है by creating a retirement corpus through their pension plan. India's government runs pension schemes such as the National Pension Scheme, Provident Public Fund, Employees Provident Fund Organization as the key contributors to the country's domestic institutional investors. Now the fourth type is banking and financial institutions. A final contributor to the domestic institutional investing in India are the banks and financial institutions. They invest and help in booming the country's economy. So guys, this was about all the domestic institutional investors in India and their types. I hope this video has been valuable to you, and if you like it, please share it with your friends. Keep watching our videos. Bye-bye, take care, and happy investing. For future updates and queries, visit social media handles of TradeSmart.